any police here today. Everything we do, it should be according to Sadhu, Shastra, and Guru. The way Srila Prabhupada taught us to raise our hands is like this. Hands are open, a little bit up and toward each other. Yes, exactly. And he also said that we should raise our hands the way Gornitai raised their hands. Gornitai came to this world to teach us how to be devotees. So they're raising their hands like this. This is surrender. This means you're open for the mercy. Yes, more mercy, please. To me, this looks like, no more mercy, stop. I've had enough mercy, no more, please. Everything has significance. The problem is that you're learning from people who have become, how do you say, it's become a fashion now in ISKCON to hold your hands like this. If you go to Mayapur, in the big temple rooms, you see thousands of devotees. They're all going like this. So naturally you think, well, if everybody else is doing it that way, I guess that's the way I'm supposed to do it. But I don't think you can find any photo or video of Srila Prabhupada holding his hands like this. It's always like this. So we should follow Srila Prabhupada, not just what everybody else does. Just because it's popular, just because everybody else does it, doesn't mean that's the way you should do it. Any questions? Any objections? Okay, thank you. Now, where's that screen? Oh, there's the screen. Can everybody see the screen? Okay, so wait a minute. I need cartels. No. Yeah, I mean, we're in a temple room. There must be cartels. Thank you. Sure.
a little far away. It's hard to read. Okay, I'll try. Today we have. Today is a special day in three ways. Today we're observing the 10th anniversary of the opening of this temple. And we're also observing the anniversary of Srila Prabhupada's taking sannyas. And also, this is the auspicious day of Bhadra Purnima. We have any fans in here? So, because it's the anniversary, because it's the anniversary of Srila Prabhupada's having taken sannyas, we're going to sing this song, Shri Shri Sad Goswami Astakam. Because Srila Prabhupada said, if you sing this song and understand its meaning, then you will understand the perfection of renunciation. And that, after all, is the purpose of sannyas, is for renunciation. So I don't think, I think it'll be too difficult for you to follow along. You can try. Anybody play Mridanga here? No Mridanga. Huh? You play Mridanga? This is too much wind. Yeah, fine. Not so loud. Krishna Kirtana Gana Nachana Paro Premamritam Boniti Diva. Okay, if they want to try, it's okay, but they have to sing on the same key. Don't make it sound like a funeral. No, I'm singing Krishna Kirtana Gana, and then you're singing Krishna Kirtana Gana. Pretty depressing. Krishna Kirtana Gana Natana Paro Premamritam Boniti Krishna Diva Devachana Priya Priyakaro Nirmacharo Puchito
Shri Chaitanya Kripa Baro Bhuvi Bhavo Parabhantarato. Vande Rupa Sanatano Sadhusato Shri Bhagavata. Okay, here's what we're going to do. I think it's too difficult for you to follow. Translate, please. So therefore, I'll sing all 4 lines of the verse myself. You repeat the 4th line. The 4th line is the same in every verse. Nana Shastra Vicharanai Kanipano Satama Santa Pato Lokanam Itakarano Tripuvane Manyo Sharanakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataveto Vande Rupa Sanatano Sadhusato Shri Jiva Gopalato. Shri Gauranga Gunanavanana Vedo Radha Samidambito Vapotapane Quintano Tanubitan Govinda Ganamitan Anandambori Varanai Kanipano Vaivayane Sarato Vande Rupa Sanatano Vadhusato Shri Jiva Gopalato. Tatvato Namaste Samandalapati Senim Sadatu Chavan Utpadina Ganeshako Karunaya Gopina Kanta Sito Gopi Baba Rasamita Pilari Alola Mano Vande Rupa Sanatano Sadhusato Shri Jiva Gopalato. Gujat Kokila Hansa Savasagana Mayura Gujat Kokila Hansa Savasagana Yene Mayura Kule Nanaratna Nivada Mola Vitapa Shiyukta Vindavane Radha Krishna Mahana Santa Bhajato
Jivata Doyumuda Vande Rupa Sanatano Radujano Jivado Pavato Santya Purvakanamagana Natapi Kalavasani Pito Vidraravharakari Vijato Satyanta Dino Chayo Radha Krishna Gunas Vichar Madhurima Nandena Samohito Vande Rupa Sanatano Adhujato Shiji Bhato Pavato Natano Adhujato Shiji Bhato Nata Kunda Tate Kalinda Tanaya Kiri Chavan Shivate Premonara Vashara Shesha Dasaya Rasto Pramato Sada Jayanto Chakara Hare Gunavaram Bhava Viputo Mudha Vande Rupa Sanatano Sadhujato Chichi Vato Pavato Radhe Vajate Vike Chalavite Nanda Suno Tuta Shri Govardhana Tapapada Patale Tawindi Vanye Tuta No Shanta Vitti Sarvato Vachapure Jaya Mahavibhavo Vande Rupa Sanatano Sadhujato Chichi Bhato Pavato Vande Rupa Sanatano Sadhujato Chichi Bhato Pavato Vande Rupa Sanatano Sadhujato Chichi Bhato Pavato Now, do they understand it all? The Sanskrit is practically like the Hindi, so they understand everything, or do we have to read it? No, it's purely Sanskrit. What's that? It's purely Sanskrit, so they would not be able to understand it literally. Huh? You mean to say they, no, they will not able to understand. We need to read. We should read it in Hindi. Yeah. Okay, so you read it in Hindi. And wait. The thing is, like I said, Srila Prabhupada said that because we're talking about Prabhupada's sannyas initiation. तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा और उस चीज के ऊपर हम इससे जोर देते
So sannyas initiation is for renunciation. तो संन्यास का जो दीक्षा है ये वैराग्य के लिए है। And Srila Prabhupada said that if you learn these prayers, Sri Sri Goswami Astakam, and understand their meaning, then you will understand the perfection of renunciation. तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर आप सर्वस्वामी अष्टक पढ़ेंगे और इसके अर्थों को समझेंगे तो आप संन्यास का जो परिपूर्णता है उसी को समझ पाएंगे वैराग्य। Therefore, listen very carefully. इसलिए आप केवल ध्यानपूर्वक इसका श्रवण कीजिए। And you don't read too fast, okay? तो अभी हम सर्वस्वामी अष्टकम का अनुवाद पढ़ेंगे। मैं श्री रूप सनातन रघुनाथ भट्ट रघुनाथ दास श्री जीव एवं गोपाल भट्ट नामक इन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ जो श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं के कीर्तन गायन एवं नृत्य परायण थे, प्रेमामृत के समुद्र स्वरूप थे, विद्वान एवं सर्वसाधारण जन मात्र के प्रिय थे तथा सभी के प्रक्रियाओं को करने वाले थे, मात्र शरीर रहित एवं आश्चर्य रहित एवं सर्वलोक पूजित थे, चैतन्य देव की अतिशय कृपा से युक्त थे और भूतल पर भक्ति का विस्तार करके भूमि का भार उतारने वाले थे। दूसरा, मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ जो अनेक शास्त्रों के गूढ़ तात्पर्य विचार करने में परम निपुण थे, भक्ति रूप परम धर्म के संस्थापक थे, जनमात्र के परम हितैषी थे, तीनों लोकों में माननीय थे, शरणागत वत्सल थे एवं श्री राधा कृष्ण के पदारविंद के भजन रूप आनंद से मत्तम रूप के समान थे। तीसरा, मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ कि जो गौरांग देव के गुणानुवाद की विधि में श्रद्धा रूप संपत्ति से युक्त थे, श्री कृष्ण के गुणगान रूप अमृत वृष्टि के द्वारा प्राणी मात्र के पाप ताप को दूर करने वाले थे तथा आनंद रूप समुद्र को बढ़ाने में परम कुशल थे, भक्ति का रहस्य समझाकर जीवों को केवल्य मुक्ति से बचाने वाले थे। चौथा, मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ कि जो लोकोत्तर वैराग्य से समस्त मंडलों के अधिपत्य के पद को शीघ्र ही तुच्छ की तरह सदा के लिए छोड़कर कृपा पूर्वक अतिशय दीन कौपिन एवं कंठा गुदगुड़ी को धारण करने वाले थे तथा गोपी भाव रूप रसामृत सागर की तरंगों में आनंद पूर्वक निमग्न रहते थे। पांचवा, मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ कि जो कलरव करने वाले कोकिल हंस सारस आदि पक्षियों से व्याप्त एवं मयूरों के स्वर से आकुल तथा अनेक प्रकार के रत्नों से निबद्ध मूल वाले वृक्षों के द्वारा शोभायमान श्री वृंदावन में रात दिन श्री राधा कृष्ण का भजन करते रहते थे तथा जीवन मात्र के लिए हर्ष पूर्वक भक्ति रूप परम पुरुषार्थ देने वाले थे। छठवां, मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ कि जो अपने समय को संख्या पूर्वक नाम जप नाम संकीर्तन एवं प्रणाम आदि के द्वारा व्यतीत करते थे, जिन्होंने निद्रा आहार विहार आदि पर विजय प्राप्त कर ली थी एवं जो अपने को अत्यंत दीन मानते थे तथा श्री राधा कृष्ण के गुणों की स्मृति से प्राप्त माधुर्य
आनंद के द्वारा विमुक्त रहते थे। सातवां, मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ कि जो प्रेमोन्माद के वशीभूत होकर विरह की समस्त दशाओं के द्वारा ग्रस्त होकर प्रेमादि की भांति कभी राधा कुंड के तट पर, कभी यमुना के तट पर, तो कभी वंशीवट पर सदैव घूमते रहते थे और कभी श्री हरि के उत्तम गुणों को हर्षपूर्वक गाते हुए भाव में विभोर रहते थे। आठवां, मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ कि जो हे ब्रज की पूजनीय देवी राधिका, आप कहाँ हो? हे ललिते, आप कहाँ हो? हे ब्रज राजकुमार, आप कहाँ हो? श्री गोवर्धन के कल्प वृक्षों के नीचे बैठे हो अथवा कालिंदी के कमनीय पुल पर विराजमान वन समूहों में प्रबल कर रहे हो। इस प्रकार पुकारते हुए विरह जनित पीड़ाओं से परम विहल होकर ब्रजमंडल में सर्वत्र रमण करते थे। As I said, these prayers are extremely important. तो जैसे कि मैंने कहा कि ये गोस्वामी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। The principle of renunciation is not only for initiated sannyasis. तो जो सन्यास की जो सिद्धांत है, ऐसा नहीं है कि केवल मात्र जो सन्यास दीक्षित मुक्ति है। It's for everyone. ये सभी के लिए है। There's a verse in the Chaitanya Charitamrita that says that renunciation is the basic principle that sustains the lives of the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जो सन्यास के जो सिद्धांत है वो हमारी जो भक्तिमय जीवन है चैतन्य महाप्रभु के जो भक्तों का वो उसका आधार है। The verse doesn't say sustains the lives of the sannyasis. तो वो जो श्लोक है वो ऐसा ही बताते हैं कि जो सन्यासियों को जीवन का आधार है वो सभी के लिए। The verse says renunciation is the basic principle that sustains the lives of the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो वो जो श्लोक है उसमें ऐसे बताते हैं कि जो सन्यास की जो सिद्धांत है ये हमारे चैतन्य महाप्रभु के अनुगत जो भक्त है उनके आधार है, जीवन का आधार है। So in one sense, everybody in ISKCON should be a sannyasi. तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस्कॉन में जितने भक्त हैं वो एक सन्यासी जैसे जीवन यापन करते हैं। And Srila Prabhupada explains this principle in Bhagavad Gita. तो श्रील प्रभुपाद जी ये जो सन्यासी जो सिद्धांत है भगवद गीता में बताते हैं। Chapter 6, text 1. तो छठे अध्याय के श्लोक संख्या 1। The meaning is that real renunciation or real sannyas is one gives up the desire to enjoy independently of Krishna. तो उसमें ऐसे बताते हैं कि जो सन्यास का जो मूल अर्थ इस प्रकार है जब वो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा को त्याग देता है। So I recommend that everyone study these prayers. तो इसलिए मैं कहूँगा आप सभी से कि ये जो प्रेयर है ये जो भजन है आप सभी इसको गाइए और अर्थ को समझिए। In fact, it's a good practice for your sadhana, to make part of your sadhana, reciting these prayers every day. तो ये हमारे साधना के लिए बहुत अच्छा है कि रोज प्रतिदिन इस प्रेयर को करना। It only takes a few minutes. और ये कुछ ही मिनट लगता है इसको। Okay, now we're going to read a verse. Where is it? We're going to read a verse from the Bhagavatam. Canto 1, chapter 6, text 26. Namanyanantasya hatatrapa patan guhyani bhadrani kritani cha smaran
Ganparyatans tushtam managataspriham kalan patikshan vimado vimatsadaha. You have it? 1626? Okay. So this is Narada Muni speaking. तो ये जो नारद मुनि द्वारा इस श्लोक का उच्चारण है। Thus I began chanting the holy name and fame of the Lord by repeated recitation, ignoring all the formalities of the material world. Such chanting and remembering of the transcendental pastimes of the Lord are all benedictory. So doing, I traveled all over the earth, fully satisfied and without being proud or envious. तो अनुवाद इस प्रकार है, इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश या कीर्तन करने लगा। भगवान का दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या और द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। I chose this verse and purport because they seem to me to perfectly describe Srila Prabhupada. और मैंने विशेष करके इस श्लोक और इस तात्पर्य को इसलिए चुना कि ये श्रील प्रभुपाद जी को बहुत अच्छी तरह से वर्णन करते हैं। Purport by Srila Prabhupada. और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का। The life of a sincere devotee of the Lord is thus explained in a nutshell by Narada Muni by his personal example. तात्पर्य नारद मुनि के ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया। Such a devotee, after his initiation by the Lord or his bona fide representative, takes very seriously chanting of the glories of the Lord and traveling all over the world so that others may also hear the glories of the Lord. ऐसे भक्त भगवान से या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और सारे संसार में विचरण करता है, जिससे अन्य लोग भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सके। Such devotees have no desire for material gain. ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रहती। They are conducted by one single desire to go back to Godhead. उनकी एकमात्र इच्छा होती है कि वे भगवान के धाम में वापस जाएं। This awaits them in due course on quitting the material body. यथा समय भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें ये अवसर प्राप्त होता है। Because they have the highest aim of life, going back to Godhead, they are never envious of anyone, nor are they proud of being eligible to go back to Godhead. क्योंकि भगवत धाम को वापस जाना उनके जीवन का चरम लक्ष्य रहता है, अतः वे न तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, न ही भगवत धाम जाने के लिए ईर्ष्या करते हैं। Their only business is to chant and remember the holy name, fame, and pastime to the Lord, and according to personal capacity, to distribute the message for others' welfare without motive of material gain. उनका एकमात्र व्यवसाय भगवान के पवित्र नाम, यश तथा लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करना और अपने व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर दूसरों का कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना होता है। That's the end of the purport. और इसी के साथ समाप्त होता है। And there are many other places in Srila Prabhupada's books where he explains what it means to be a sannyasi. और भी अन्य जगह श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि सन्यासी का असल धर्म क्या है। Sannyas is not just a, how do you say, it's not just a matter, it's not just a formality. तो ये सन्यास ऐसा नहीं है कि केवल मात्र एक औपचारिकता है। But as I said, sannyas means to renounce the desire to enjoy independently of Krishna. तो सन्यास का अर्थ ये है कि वो विचार को त्याग देना कि स्वतंत्र रूप से हम इंद्रिय करें। And especially to use one's life for spreading Krishna consciousness. और विशेषकर अपने जीवन को कृष्ण प्रचार हेतु समर्पित करना।
Srila Prabhupada explains in one purport that there are two kinds of, in one sense, there are two kinds of sannyasis. शिला प्रभुपाद एक जगह तात्पर्य में समझाते हैं कि दो प्रकार के सन्यासी कह सकते हैं. There's Gosyananandi and there's Atmanandi or huh? Or Bhajananandi. तो ऐसे दो प्रकार के बोल सकते हैं सन्यासी कह सकते हैं, जो एक गोष्ठानंदी है और दूसरा है बंधानंदी. So the Atmanandi, who's also called Bhajananandi, he's just satisfied to just hear and chant and just develop his relationship with the Lord. तो आत्मानंदी या जिनसे भजनानंदी भी कह सकते हैं, उनका उद्देश्य रहता है कि वो भगवान का नाम जप करता है, कीर्तन करता है और अपने जो भगवान और श्री कृष्ण के संबंध को स्थापित करता है. But the Gosyananandi takes the responsibility and the risk of preaching Krishna consciousness. और पर जो गोष्ठानंदी रहता है वो जिम्मेदारी लेता है और इसके ऊपर वो संकट के अपने ऊपर ले लेता है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का. When you try to preach Krishna consciousness, you take some risk. तो आप जब भी कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हो तो आप बहुत सारे संकट अपने ऊपर ले लेते हो. But whether materially or spiritually, if you don't take risk, you don't get anywhere. तो अगर बौद्धिक दृष्टिकोण से या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो रिस्क नहीं लेता है तो वो आगे नहीं बढ़ता. Srila Prabhupada said that joining the Krishna consciousness movement is like a kind of gambling. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में प्रवेश करना एक प्रकार का जुआ है. You're taking a risk तो आप अपने ऊपर रिस्क लेते हो because you don't really know what's going to happen. तो आप जब भक्ति में आते हो आपको पता नहीं आपके साथ क्या होने वाला है. He said this kind of gambling is good. इस प्रकार का जुआ अच्छा है. When Srila Prabhupada went to Sumati Maharaj in 1965 to ask her for passage on her ship going to America, तो श्रील प्रभुपाद जी जब 1965 में श्रीमती मोरार जी के पास गए कि उनको जो जलवाहन है उनमें से उनको एक पैसेंजर टिकट चाहिए था अमेरिका में जाने के लिए. so of course Prabhupada at that time was almost 70 years old. तो आप समझ उस समय तो श्रील प्रभुपाद जी प्राय 70 साल की उम्र थी. Sumati Maharaj was also elderly. श्रीमती मोरार जी की उनका भी काफी उम्र हो चुका था. Sumati, it's not Srimati, Sumati. सुमति. And she said, but Swamiji, she thought the whole idea was ridiculous for him to go to America. तो उन्होंने श्रीमती मोरार जी ने ऐसे करके विचार किया कि वहाँ बाहर जाना का जो विचार है बहुत बचपना है. She thought it was like some kind of craziness. तो बोले कि एक प्रकार का पागलपन है कि श्रीमती वहाँ जाना. She said, Swamiji, if you go to America, you're going to die there. लेकिन स्वामी जी श्रील प्रभुपाद जी को कहते हुए गए कि आप अगर आश्रम जगत में गए तो आप मर जाएंगे. And Srila Prabhupada said, I'm going to die anyway. और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे किसी ना किसी वक्त मैं तो मरने तो वाला ही हूँ. I might as well die trying to fulfill the order of my spiritual master. क्यों ना हम मरते मरते उनके जो गुरु है उनका आदेश का पूरा करते हुए. Srila Prabhupada said the first qualification of a sannyasi is that he's fearless. तो जो पहला जो संन्यास का जो गुण है वो है कि निर्भय होना. Srila Prabhupada was certainly fearless. और श्रील प्रभुपाद जी एकदम ही निर्भय थे. It's really difficult to imagine what a risk Srila Prabhupada was taking. तो ये कोई जन साधन की कल्पना के बाहर है कि श्रील प्रभुपाद जी कितने बड़े रिस्क को ले रहे थे बाहर जाने का. Going to an unknown land full of mlechas and yavanas. तो एक तो अज्ञात स्थान में जाने हैं पूरा मलेच्छ और इनों से भरा हुआ है. He said, as soon as I tell them about the four regulative principles, they're all going to go away. और जैसे ही जो हमारे सौदे
जो 4 नियम को जैसे ही बताएंगे और वो सब के सब चले जाएंगे। And a lot of people did go away when he told them about the four regular principles. और कितने जन को तो पता भी नहीं है 4 नियम क्या होता है। Prabhupada met so many obstacles, तो श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में प्रचार में कितने सारे गतिरोधक आए, but he just kept going, kept pushing. पर श्रील प्रभुपाद जी आगे बढ़ते रहे, आगे समाज में चलते गए। Even when he had ill health. और कभी भी करते रहे जब भी उनका शरीर अस्वस्थ थे। Harisari Prabhu said one time that in the 2 or 3 years that he was with Srila Prabhupada, तो हरीश्वरी प्रभु कहते थे कि वो जब 2-3 साल रहे श्रील प्रभुपाद जी, he said he can't remember one day in which Srila Prabhupada could be considered healthy. और वो बता रहे कि ऐसे कोई दिन याद नहीं कि श्रील प्रभुपाद जी एकदम स्वस्थ थे। The actual sannyas initiation of Srila Prabhupada is described quite elaborately in the Srila Prabhupada Lilamrita. श्रील प्रभुपाद जी के संन्यास के विषय में बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन है श्रील प्रभुपाद जी लीलामृत में। It's a good idea for everyone to study that. तो ये बहुत अच्छा विचार है कि श्रील प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ना। Not only that particular pastime, but the whole Lilamrita. तो ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत खाली कोई जो लीला है संन्यास पर, बल्कि पूरा श्रील प्रभुपाद जी लीलामृत पढ़ना चाहिए। If you're going to commit your life to ISKCON, to Srila Prabhupada's mission, you need to understand Srila Prabhupada. तो अगर आप अपना जीवन को श्रील प्रभुपाद जी के मिशन के लिए बनाना चाहते हो तो आपको श्रील प्रभुपाद जी को समझना पड़ेगा प्रभुपाद लीलामृत द्वारा। So that you'll find in the Lilamrita. और ये सब चीज आपको श्रील प्रभुपाद लीलामृत से प्राप्त हो सकता है। So those of you who don't have Srila Prabhupada Lilamrita at home, I highly recommend that you buy a set today. तो आप ऐसे जिन जिन भक्तों के पास श्रील प्रभुपाद जी लीलामृत नहीं है, मैं अपनी तरफ से कहूँगा, जोर देके कहूँगा कि आपको श्रील प्रभुपाद जी लीलामृत का एक सेट आपको खरीदना चाहिए। And if you like, after you buy your Lilamrita, I'll sign your books. और अगर आप चाहें तो महाराज जी के हाथों से खरीदने के बाद महाराज जी का हस्ताक्षर ले सकते हैं। Now, another topic for today is that this is the anniversary of the opening of this temple. और दूसरा विशेषता आज के दिन का ये है कि हमारे राधा कृष्ण मंदिर का आज 10वां सालगिरह है। I don't know very much about it, मतलब मुझे ज़्यादा मंदिर के इतिहास के विषय में नहीं पता। although I heard that Vanamali Maharaj and Padma Maharaj were instrumental in making this place happen. तो मुझे अधिक तो पता नहीं है, पर इतना मैं भक्तों से सुना हूँ कि भक्ति करुणा वरनौली महाराज और भक्ति पद्म स्वामी महाराज जी का बहुत योगदान है इस मंदिर को इस मुकाम तक लेके आने के लिए। Srila Prabhupada said there are 3 ways you can evaluate the strength of your preaching. तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि आप एक तरीके से अपने जो टीचिंग है, प्रचार के उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। One is how many people join the Krishna consciousness movement. तो प्रथम ये है कि आपने कितने भक्तों को जोड़ा इस आंदोलन में। Second point is how many books are being distributed. और दूसरा है कि आपने कितने प्रभुपाद पुस्तकों का वितरण किया। And the third point is how many temples are being opened. और तीसरा ये है कि आप कितने मंदिर का आपने निर्माण किया। Of course, just opening a temple, in one sense, is not such a big deal. तो केवल मात्र एक मंदिर खोलना है वो बड़ी बात नहीं है। But to maintain the temple in good order, that is a very big deal. और पर मंदिर को मेंटेन करना, उसको शुरू से चलाना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। These deities and their altars are so beautiful. तो आप देखेंगे जो मंदिर का जो गंभीर है और जो विग्रह है कितने सुंदर है। How much effort is put into maintaining such nice worship of the deities. तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना परिश्रम लगता है कि इतने
सुंदर अर्चन विग्रह को सेवा करने के लिए कितना इसमें संघर्ष लगता है प्रयास। Srila Prabhupada was very conscious of that in India, although there are many temples, but he said most of them are not nicely maintained. और श्रील प्रभुपाद जी ये बात में बहुत सचेत थे कि हालांकि हमारे भारत में बहुत सारे मंदिर हैं पर वो मंदिर इतने अच्छी तरह से मेंटेन नहीं किए इतने सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। So he was very concerned that the deity worship be maintained in an elaborate fashion. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इस चीज का विशेष ध्यान रखते थे कि हमारे जो अर्चन विग्रह है इसको भव्य रूप से हम इनका सेवा करें। He said these are our two great contributions to the world, deity worship and book distribution. तो हमारे संस्था का ये जगत के लिए दो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। एक तो है डीटी वर्शिप अर्चन विग्रह की सेवा और दूसरा है ग्रंथों का वितरण। So all glories to those devotees who have made this temple happen. तो मैं उन सभी भक्तों का आभारी हूँ कि जिन्होंने इस मंदिर को इस काम तक ले गया है And who are maintaining it in good fashion. और इनको बहुत सुंदर सुचारू रूप से इसको परिचालना कर रहे हैं। In one sense, Prabhupada said that temples are not needed. एक दृष्टिकोण से श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार कहा कि हमें मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं है। There's Pancharatriki Vidhi and Bhagavad Vidhi. तो दो विधि है, एक पंचरात्रिक विधि है और दूसरा है भागवत विधि। Pancharatriki Vidhi means temple worship. और पंचरात्रिक विधि अर्थात की जो मंदिर में अर्चन विग्रह की सेवा Refers to deity worship. तो जिसे हम डीटी वर्शिप करते हैं। Bhagavad Vidhi means hearing and chanting and broadcasting the glories of the Lord. तो और भागवत विधि है भगवान का श्रवण कीर्तन करना और भगवान के नाम का प्रचार करना। And he said that the Bhagavad Vidhi is more important. और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि भागवत की जो विधि है वो पंचरात्रिक विधि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। But that doesn't mean we can discard the Pancharatriki Vidhi. तो इसका मतलब अर्थ नहीं है कि जो पंचरात्रिक विधि है उसको बाद में करते हैं। He said that deity worship is important for keeping us clean. बोले कि जो अर्चन विग्रह का जो सेवा है वो हमारे जीवन में स्वच्छता लाने में सहयोग करता है। He also said that the book, Pancharatriki Vidhi and Bhagavad Vidhi, he said are like two rails of the train track. तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार इसी को वर्णन करते हुए कहा कि पंचरात्रिक विधि और जो भागवत विधि है जो हमारे जो ट्रेन का जो पटरी देखा होगा तो उसके अंदर दोनों जो पटरी है एक पंचरात्रिक विधि है दूसरा भागवत विधि है। He said both are required. तो एक ट्रेन को जैसे चलने के लिए दोनों पटरी की आवश्यकता है इसलिए हमारे लिए दोनों आवश्यक है। Yet the emphasis always must be on preaching. पर हमारा जो जोर है जो जोर देना चाहिए वो हमें प्रचार में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। He considered that that's really what the temple is for a place to gather to hear and chant the glories of the Lord. और श्रील प्रभुपाद जी बोले कि यही हमारा उद्देश्य है इतने भव्य मंदिर करने का यही है कि हम भगवान के विषय में अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन करें। And the temple should be a headquarters for sending devotees out to spread Krishna consciousness. और एक मंदिर एक हेडक्वार्टर रूप से ये कार्य करता है कि सब भक्तों को इधर-उधर प्रचार के भेजने के लिए। So as far as I've seen, this temple is fulfilling all of Srila Prabhupada's desires. और जहाँ तक मैंने इस चीज को देखा है कि जो यहाँ के जो भक्त है जो मंदिर का जो उद्देश्य है उस चीज को बहुत अच्छी तरह से उसको पूरा कर रहे हैं। So you're all very fortunate to be members of this congregation. तो आप बहुत भाग्यवान हो कि इस मंदिर से आप जुड़े हुए हैं। Now the next topic, third topic, is that today is Bhadra Purnima. और आज का जो तीसरा महत्वपूर्ण जो विषय है वो है भाद्र पूर्णिमा। And it's a very important, auspicious day. आज बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण दिन है। There's a verse in the Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 13,
text 13. तो एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में स्कंद 12 अध्याय 13 और श्लोक संख्या 13। If on the full moon day of the month of Bhadra, one places Srimad Bhagavatam on a golden throne and gives it as a gift, he will attain the supreme transcendental destination. यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णिमा मासी को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत का दान उपहार के रूप में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा। So when we were making this book display this morning, we were lacking a golden throne. बोले ने हमने बहुत सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवतम को सजाया, पर फिर भी हमने जो भागवत में वर्णन नहीं किया रत्न सिंहासन का होना चाहिए, सोने के सिंहासन का, वो नहीं कर पाए। Yeah, the devotees tried to make it as elaborate, as attractive as possible. पर भक्तों ने प्रयास किया इसको बहुत आकर्षण बनाने का, यथार्थ रूप से। In one sense, these books are non-different from the Archa Vigraha on the altar. तो एक दृष्टिकोण से जो श्रीमद् भागवत है, ये जो हमारे ऑल्टर में जो अर्च विग्रह है, ये इससे कोई भिन्न नहीं, अभिन्न है। They are worshipable. तो इनका भी हमें अर्चन करना चाहिए। Srila Prabhupada said that if you have these books in your home, it's like having Narayan in your home. If you have these books in your home, it's like having Narayan in your home. Narayan. तो अगर ये ऐसे भागवत अगर हमारे घर पे है, तो ये मान लो कि आपके घर पे साक्षात नारायण है। These books actually are alive. तो अगर देखा जाए तो ये जो भागवत है ये जीवन है। Sometimes somebody gets a book from one of our devotees and just puts it on the shelf. पर अगर कोई भक्त अगर इसे लेकर भक्तों से लेकर और करते उसी शेल्फ पर रख दे, But the book is alive. पर ये बुक एक ये जो ग्रंथ है एक जीवित ये है। It's not like the other books on the shelf. दूसरे ग्रंथों के समान नहीं है, पुस्तकों के समान नहीं है। And the book is vibrating. तो अब देखिए ये जो ग्रंथ है जीवित है और ये श्वास लेते हैं। I heard one story about a woman who got a book from one of our members, one of our devotees, one of our Sankirtan devotees. तो मैं आपको ये मेरा बताना चाहता हूँ कि एक स्त्री है, उन्हें एक श्रील प्रभुपाद जी का पुस्तक प्राप्त हुआ एक हमारे भक्तों से, मेंबर से। When she was young, she was like 20 years old or so. तो वो जो महिला थी वो युवा थी, 20 साल की उम्र का था। She didn't think very much of it. She took the book home and put it on the bookshelf with all her other books. तो उन्होंने कुछ डॉलर दिए और उन्होंने वो पुस्तक को खरीद लिया और घर पे आके एक कोने में डाल दिया। But then she got married and she had a son. और उसके कुछ समय में उनका विवाह हुआ और उनको संतान प्राप्ति हुई। So 17 years later, her son was having a difficult time. तो 17 साल बाद जब उनके लड़का उनका बहुत कठिन समय गुजर रहा था। And he wanted some relief. और उस समय में उसके सांत्वना के लिए कुछ चीज चाहिए था, मोटिवेशन। So he was looking in his mother's bookcase for the Bible. तो वो जो माता के जो शेल्फ थे वहाँ को ढूंढ रहे थे, उन्होंने पहले तो ढूंढने का प्रयास किया बाइबल को। But he couldn't find the Bible. पर उस समय में उनको बाइबल नहीं मिला। Usually the Bible is black. और बाइबल का वो जो उसका जो कवर पेज है वो काले में होता है। Not so easy to see. इसलिए इतना आसान नहीं है उसको देखना। But while he was looking for the Bible, he saw Bhagavad Gita as it is. तो जब वो बाइबल ढूंढते थे तभी वो शेल्फ में वहाँ उन्हें भगवद गीता as it is दिखे। So in his 17 years, he had never noticed this book. और 17 साल से उन्होंने उस बुक के ऊपर कभी उनका नजर नहीं पड़ी है। And his mother also hadn't touched it. और इस
17 सालों में वो जो उनके जो माता है जिन्होंने बुक का संचय किया उन्होंने भी कभी उस चीज को ध्यान नहीं दिया. But now he felt like he needed some guidance, some spiritual guidance. हाँ तो अभी उनको ऐसा लगा कि अभी उनका जीवन खराब चल रहा है, उन्हें कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तभी उनको नजर में. So since he couldn't find the Bible, he picked up this Bhagavad Gita as it is and started reading. और क्योंकि उन्हें बाइबल प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें जैसे भगवद गीता एज इट इज देखा, उन्होंने उसे उठाया और उसे पढ़ना चालू किया. And he liked it so much that he just kept reading and reading for hours. और उनको इतना अच्छा लगा पढ़ते गए कि वो पढ़ते गए. He kept reading all night long. और ऐसे पढ़ते पूरी रात भर पढ़ते रहे. He read the whole Bhagavad Gita just at one time. और एक ही बार में पूरा भगवद गीता पढ़ा. And then he went to the temple and moved in. और उन्होंने मंदिर में गए और मंदिर में अपना दाखिला करवा लिया. So Prabhupada said they're like, these books are like time bombs. तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि ये एक टाइम बम समान है. They may not act immediately, but eventually they will act. बोले कि भले ये जो अभी काम नहीं कर रहा है, पर ये काम करने वाला है क्रम अनुसार. So this is a great opportunity. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है. Because like you may say, well, we already have Srimad Bhagavatam in our home. तो आप में से कोई तर्क दे सकता है कि हमारे पास तो श्रीमद् भागवतम पहले से ही है. But this verse says that if you give the Bhagavatam, a set of Bhagavatams as a gift, then you get the supreme destination. तो ऊपर अगर ये श्लोक पर अगर गौर करेंगे तो ये श्लोक में ऐसे कह रहे हैं कि अगर आप श्रीमद् भागवतम का अगर दान करते हैं तो आपको परम गंतव्य प्राप्त हो सकता है. So whether you read it yourself or give it as a gift, तो चाहे आप श्रीमद् भागवतम पढ़े या आपको विशेष करके या आप जो भी दान करें. yeah. In any case, this is a most auspicious day for purchasing a set of Srimad Bhagavatams. तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत भावपूर्ण दिवस है और इस ग्रंथ को आज खरीदना. And if you purchase a set of Srimad Bhagavatams today, I will sign every volume if you want me to. तो अगर आप आज के दिन अगर खरीदते हैं अगर आप चाहें तो महाराज जी प्रत्येक स्कंद में अपना हस्ताक्षर. And also, sometime later, I can come to your house and we can have an installation ceremony. अगर आप चाहें तो आप इसको संचय कर सकते हैं और घर पे इसका जैसे विग्रह का स्थापना करते हैं इसको स्थापना करने के लिए आप मुझे बुला सकते हैं. You know, people have to survive in this world. तो हमें इस जगत में हमें जीवित रहना प्राण को रखना. And of course, that takes some money. और इसके लिए आपको होना चाहिए. But we also have to be concerned with our spiritual survival, not just physical survival. तो जैसे हम भौतिक दृष्टि में जीवित रहने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी हम किस तरह से जीवित रहें, उस चीज का भी हमें प्रयास करता रहना चाहिए. And without studying Srimad Bhagavatam, you will simply remain in ignorance. बोले कि अगर आप श्रीमद् भागवतम का प्रतिनिधि अगर इसका अध्ययन नहीं करते हैं, तो आप घोर अंधकार में रहेंगे. Do yourself a favor and get a set of Srimad Bhagavatams. तो अपने ऊपर आप कृपा कीजिए और एक श्रीमद् भागवतम को प्राप्त कीजिए. Where's Krishnanandan Prabhu? कृष्ण. Yeah, so who's going to sell the books? Huh? Gord Jagannath Prabhu, you're selling the books? Are you selling the books? Huh? Huh? What? Yes, Maharaj. I have the rates. He has the price. He has everything ready, so he's selling it. He has all the price list and all. Okay, fine. So let's say for a set of Srimad Bhagavatams in Hindi, how much is that? 6,900 for a set of Srimad Bhagavatams in Hindi.
तो आप श्रीमद् भागवतम हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं 6,900 में। You're spending money every day on various things. तो आप प्रति दिवस अपने पैसे को अलग-अलग नाना प्रकार की चीजों में खर्चा करते हैं। And if you're keeping accounts, then the category is called expenses. अगर आप उन सब चीजों को अगर उसको एनालिसिस करेंगे एक जगह देखेंगे तो ये सब बहुत सारे खर्चा है, ये सब खर्चे। But buying Srimad Bhagavatam is not an expense. पर ये जो आप श्रीमद् भागवतम के लिए अगर पैसा अगर देते हैं तो ये आपकी खर्चा नहीं है, ये तो आपका निवेश है। It's an investment ये एक निवेश है in your spiritual future and your, how do you say, your descendants' spiritual future. तो ये आपके आध्यात्मिक भविष्य के लिए है, केवल आपका नहीं, आपके जो बच्चे हैं उनके आध्यात्मिक भविष्य के लिए है। Srila Prabhupada said that just chanting 16 rounds a day on your beads is not enough. तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे केवल मात्र अपने जपमाला में 16 माला करना ये पर्याप्त नहीं है। To be able to chant properly the Hare Krishna Maha Mantra, you need to study Srimad Bhagavatam. पर इसे अगर ध्यान पूर्वक इस जप को करना है तो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना आवश्यक है। And you're unlikely to study it if it's not in your home. और ये तो जाहिर है कि अगर आपके पास घर में श्रीमद् भागवतम नहीं है तो आप अध्ययन भी नहीं कर पाओगे। How many sets do we have? 10 sets? 10 sets in total, almost 7, 8. Huh? 7, 8 are here, few are more downstairs. Okay, Total 10. total 10. Okay, we have 10 sets of Srimad Bhagavatam in Hindi. तो हमारे पास यहाँ 10 भागवतम सेट हैं हिंदी में। So unfortunately, that's not enough for everybody here. पर हमारा सौभाग्य है कि आप सब कितने जन हैं, हमारे पास केवल मात्र 10 हैं। So only the 10 most enthusiastic and devotional people here will get a set of Bhagavatam. तो आप में से जो 10 जो उत्साहित भक्त हैं, जो भक्त हैं, भक्तिपूर्ण हैं, उनको ये चीज 10 भागवतम सेट प्राप्त कर सकते हैं। Okay, so we need one person to take care of the. He's going to record? Okay, but I don't think he's going to be able to do it by sitting there. I think he has to stand up. आप खड़े हो जाइए। Yeah, good. Okay. And if you want to pay electronically, that's okay. We have facility for you to pay electronically. तो आप में से जो ऑनलाइन अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ यूपीआई कोड भी बन सकता है, आप कर सकते हैं, सारी सुविधा है। Also, I'm going to distribute some prasadam. और मैं कुछ प्रसाद का भी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला हूँ। Can someone bring this up here? What? 2 people have asked for 2 Bhagavatam sets. Already? Really? How do you know? So that turn to be names. Oh, I just got news that we've already sold 2 Bhagavatam sets. So there's only 8 more left. तो 2 भागवतम ऑलरेडी बुक कर दिया है और 8 भागवतम बाकी है सेट। We also have Bhagavatam set in English. Yes, Maharaj. Yeah, तो हमारे पास श्रीमद् भागवतम इंग्लिश में भी उपलब्ध है and 1 set in Marathi. और मराठी भी है। Okay? So no excuses, okay? तो इसलिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि बहाना नहीं चलेगा। Think of everything you spend money on. बोले कि आप विचार करो आप कितना कितना खर्चा करते हो ये सब इधर उधर। Think how important is it really? और विचार करो कि इतने सारे खर्चा करो सब चीज की आवश्यकता क्या है। And then think how important is the Bhagavatam. और दूसरा विचार ये करो कि ये श्रीमद् भागवतम कितना महत्वपूर्ण है। As explained in the 2nd verse of Srimad Bhagavatam, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, the highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. तो ये जो परम सत्य है कि In the 2nd verse of Srimad Bhagavatam, जो सेकंड कैंटो में श्रीमद् भागवतम
It stated that the highest truth तो उसमें वर्णन है जो परम सत्य है, is reality distinguished from illusion. हाँ, तो जो वास्तविकता वो अज्ञान से पृथक करने का, For the welfare of all. सभी के हित के लिए। This you won't get anywhere else. तो ये जो चीज है आपको बाहर कहीं भी नहीं प्राप्त होगा। This you get especially in Srimad Bhagavatam. और ये सब चीज आपको श्रीमद् भागवत के अंदर ही प्राप्त हो सकता है। Okay, do we have anybody here who can lead a nice kirtan? आप ऐसे कोई है जो सुंदर कीर्तन कर सकता है? Actually, Srila Prabhupada said anyone can lead kirtan. श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कोई भी कीर्तन लीड कर सकता है। You're all qualified. आप सब क्वालिफाइड हैं। Don't be a coward. आप ऐसे डरपोक मत बने सामने आगे के। Mataji's also? Yes? Okay, so I don't know. What are we doing? We need some, because while people are coming up and getting prasadam and buying books, we need to have a nice kirtan going. तो जब भी सब भक्त आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम कर रहे हैं और महाराज जी के पास एक करके आ सकते हैं और महाराज जी प्रसाद दे सकते हैं, तब तक वो कीर्तन चालू रहेगा। और दूसरा चीज है, आपको महाराज जी को अगर व्यक्तिगत रूप से कोई दक्षिणा देना है, श्रील प्रभुपाद जी के परम कृपा पात्र शिष्य है प्रभुपाद जी के, तो अगर आप उनको व्यक्तिगत रूप से कोई अगर दक्षिणा देना चाहते हैं, तो यहाँ इस बास्केट में आप रख सकते हैं महाराज जी की। So 3 sets? 3 sets. 3 sets gone. You better. What's that? 2 Hindi, 1 English. 2 in Hindi and 1 in English. Okay. You better start coming up and getting your books. Or you may lose out. Should I call for them? Huh? Should I call Maharaj? Call what? Should I invite after? Okay, after Prasad. Yeah, but you're taking the money? No, I have the names. Money. Online. Is everybody going to pay online? All these 3 have paid online. If someone gives cash, probably and they will be giving here. I don't understand. They're all They'll paying. manage it. They will manage it. They'll manage it. Okay. Okay, so I guess that's all. ये था मैं तो आपको देंगे Thank you all for your kind attention. और बहुत ही धन्यवाद आपका ध्यान देने के लिए। And listen, when you come up to get prasadam, you don't need to bow down and prove how humble you are. तो आप जब भी यहाँ आओ तो आप यहाँ डंडवत प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बताने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत नम्र हो। तो इसलिए आप यहाँ आके Wait, what are you doing?